So very good evening, everyone. ಅದೇ So PLI ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. today we will be starting. Today we will ಅದೇನು be ಅಂತ starting ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. the first chapter of our syllabus, that is trial balance. Okay. So in the last two classes, we have seen the process of making journal entries. Okay, and now we will start the trial balance. What is this trial balance? Okay, before that, let me confirm whether I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. And screen is also visible now. Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So the thing is that now we'll start with trial balance. So trial balance, what is this trial balance? According to the principle of double entry system, the system we are following it is double entry system. Double entry system of track keeping in okay. So according to the double entry system of bookkeeping, in any transaction, if one account in the ledger is debited, then another one should be credited with the same amount. This is the rule we have seen, and we have seen that in any journal entry, if there is one debit account, then there is equal amount of credit. Okay, the two accounts in the ledger must be in balance, means both the ledgers should be equal. If the one side of the ledger is showing 100 rupees, then the other side also show 100. Okay, if an account shows debit, if the account shows debit balance, there must be another account which should show credit balance. Means in one side, if one account is showing some debit balance of rupees 100, okay, rupees 100, then in another account there must be a credit balance of 100. Then only we can say it is correct or it is telling. This is true in case of not only entries relating to one transaction. Not like that we have entered one journal entry or one ledger posting. That is true for one entry, but for all the ledgers, all the journal entries, if there are 100 or there are millions of journal entries, then this rule will follow. Hence, there must be debit and equal amount of credit. Okay, this is the scenario. Means there are, it doesn't matter how many transactions are recorded. Okay, in all cases, the debit amount should be equal to the credit amount. That is if the that is if the transactions are properly entered, total of the amounts showing debit balance will be equal to the total of the amounts showing in the credit balance. Okay, that is what meant by the statement the ledger should always be in balance. It is often said actually for the ledgers that the ledger should always be in balance. Means the ledgers should always be in balance. Means for equal amount of debit, there must be equal amount of credit. Okay, this is the basic definition, the meaning of trial balance, which will be for which we will be doing the practicals. ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मतलब यही है कि मतलब जितना अमाउंट का डेबिट होगा उतना ही अमाउंट का क्रेडिट होगा. अगर कोई अकाउंट किसी अमाउंट से डेबिट हुआ है
उसी अमाउंट का कोई दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ऑल बिजनेस entities after completion of posting from journal सब्सिडरी बुक्स टू लेजर, मतलब जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि फ्रॉम जर्नल्स द ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड टू द लेजर। फ्लो क्या है, जर्नल टू लेजर, उसके बाद क्या है, वांट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग्स। जैसे कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया हमने, तो पोस्टिंग करेक्ट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए क्या प्रिपेयर करती है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि पोस्टिंग करेक्ट हुआ कि नहीं, whether the postings are correctly posted in the books of accounts or not, we prepare trial balance. This is called trial balance. So there are few definitions given by different authors and experts. According to Carter, trial balance is the list of debit and credit balances taken out from ledger. Means we take the balances from ledger and it is just the list of debit and credit balances. Nothing. It is just the means it is a list of debit balance and credit balances according to Carter. It also includes the balances of cash. Obviously, means cash is also an account, bank is also an account, bank account and cash account is prepared. So it is simply a list of debit balance and credit balances. Okay. Likewise, William Pickle has given one definition. You can see, I will give you the PDF. Okay. Therefore, trial balance is a schedule or list of balances. Schedule or list of balances. इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक क्या है, बैलेंस का एक शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल या फिर लिस्ट बोल सकते हैं, जहां पे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेक किया जाता है कि मतलब दोनों एरिथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज चेक्ड इन ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। मेनली एक स्टेटमेंट है ये, मतलब फुल फ्लेजेड कोई ट्रायल बैलेंस कोई मतलब कोई पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंट नहीं है, फिर भी इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और इसका कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसको प्रिपेयर करना ही कंपलसरी है। ठीक है, इसको प्रिपेयर नहीं किए भी चल सकता है, लेकिन क्या है, इसको प्रिपेयर करते हैं कि टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके, देन पीरियडिसिटी ऑफ प्रिपरेशन, ये हम चाहे तो at the end of the month भी prepare कर सकते हैं। We can prepare it at the end of the month or quarterly or for any period we want. Okay, we want to check, if you want to check the balances even after 1 week, then also we can prepare the trial balance, okay, to check the arithmetical accuracy. There is no hard and fast rule. And it is just arithmetical check, arithmetical accuracy is checked and not a conclusive proof of accuracy. अगर ट्रायल बैलेंस मैच भी हो गया, इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मतलब ये 100% जो अकाउंट्स पोस्टेड है। Someone is complaining that Shashi Prakash, you are not getting audio. Please click on the bottom left. There is a microphone type symbol. Headphone. There is a headphone. Click on that. Cell 1 or Wi-Fi data. Just click on that. You will get the audio. Anyone please respond if audio, if there is no audio. If I am audible, please respond. Chat. On chat. Shashi Prakash, you have got the audio?
Okay, fine. Now, this is the features, this is the objectives or advantages. What are the objectives of preparing a trial balance? See, why do you prepare a trial balance? To check the accuracy of ledger accounts. Means by preparing trial balance, we will come to know whether the balancing or ledger posting is correct or not. Because if the both debit side and credit side is not equal, then we can come to a conclusion that there must be some errors. Okay, and after that we have to detect that. 1 second, I'm just replying to that. Okay, after that, helpful in detection of errors. Trial balance, if we prepare trial balance, then errors are detected. Means we can find out the errors. Summary of each account means if we prepare trial balance, then in one form or in one place we'll get the summary of each and every account. Identification of required adjustments means we'll get the fields where adjustments is required. Okay, adjustment means suppose there is salary paid, but there may be some outstanding payments of salary, there may be wages paid to the workers, there may be outstanding amount, so we get the required fields where adjustment is required. Helps in preparing final accounts. So by preparing trial balance, we are one step ahead of preparing final accounts. Final account means profit and loss account and balance sheet. These things are in your syllabus. So means by preparing trial balance, we can prepare the final account, that is profit and loss account and balance sheet. Okay, these are the theory portions, few things are there. Okay, methods of preparing trial balance. This PDF you will be getting, so it is not so much tough, it is very easy. So methods, there are basically 3 methods. One is balance method. Balance method means when we prepare the ledgers and debit side and credit side is equal, and after that there is a balance. Either there will be debit balance or there may be a credit balance. From that balance, we prepare trial balance. Okay, that is balance method. And total amount method means when we add all the debit side and all the debit credit side of the ledgers, and we'll take the total portion. That is called total amount method. And total balance method means combination of the two. In 2 columns we write the balance method, and in 2 other columns we write the totals. Okay. So now we are going to start the practical for today. So if we go and practice the one practical exam, okay, then we can easily understand. अगर हम लोग एक प्रैक्टिकल करते तो हम समझ जाएंगे इजीली कि क्या चीज कैसे बनता है. ठीक है. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Anyone please? क्वेश्चन दिख रहा है अभी? अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर. अच्छा ठीक है.
देख लेते हैं। ओके, स्क्रीन अभी जो क्वेश्चन है ना, तो ये है बेसिक एक जर्नल एंट्री करने का। उसके बाद हम लोग उसको लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जो आप लोगों का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम का मैटर है, उसमें ट्रायल बैलेंस पूछा जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है तो ये हम सीखेंगे। तो चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं दिए, तो उसमें से देखिए क्या क्या है। रविशंकर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 lakhs, ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन। तो क्या पूछा, बोला गया कि मतलब इसको जर्नल एंट्री करना है और लेजर पोस्टिंग करना है, उसके बाद इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये ट्रांजेक्शन दिया 2021 अप्रैल 1, रविशंकर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ना। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रफ करेंगे। चलिए, क्या है हम लोग का बिजनेस, हम लोग क्या किसको दिमाग में रख के काम करेंगे, ये है हमारा बिजनेस। इसको थोड़ा डिजाइन कर देते, ये हो गया हमारा बिजनेस। तो दिमाग में बिजनेस को रखना है, ठीक है। तो रविशंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस को क्या आ गया, हम लोगों के पास क्या आ गया, कैश है। कैश को कंसिडर करेंगे, और ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, अभी क्या करेंगे उसको, कैपिटल। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी रूल देखा, आप लोग भी देख लेना। कैश क्या है, एसेट है। तो बिजनेस के पास क्या हुआ, कैसे एसेट क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों चीजें देखेंगे बस, मॉडर्न अप्रोच से चलते हैं, ठीक है। तो बस दिमाग में ये लगाना कि इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, बस, और कुछ नहीं लाना है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच से चलेंगे। बिजनेस को क्या, कैश आया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, नेचुरली इंक्रीज हुआ है। तो एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो रूल के हिसाब से भी डेबिट है, ठीक है। कैपिटल है, कैपिटल क्या हुआ बिजनेस का, ठीक है। ये तो कैपिटल तो क्या है, कैपिटल कैपिटल ही है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग सिर्फ 5 टाइप्स का अकाउंट होते हैं, ये है। तो ये कैपिटल, तो कैपिटल कैपिटल है, तो बिजनेस का क्या हुआ, कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, ओके। कैपिटल अगर बढ़ता है तो इंक्रीज डेबिट करते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। यहां तक तो आप लोग का हो गया, ये रूल हम लोग को कैसे निकाले, ठीक है। अब जर्नल में से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला जर्नल। पहला वाला ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला जर्नल। ऐसे लिखना है, डेट ईयर देना है, अप्रैल देना है। उसके बाद आपका आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन ऐसे लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन कैश बाय रविशंकर एस कैपिटल। रविशंकर कैश लाया है, कौन से हिसाब से लाया है, एस कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन। स्क्रीन दिख रहा है, क्वेश्चन वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या, यस सर। क्वेश्चन वाला दिख रहा है ना अभी, यस सर, यस सर। ओके। और अभी अभी कौन सा दिख रहा है, अभी प्रॉब्लम दिख रहा है सर। ओके ओके ओके, जर्नल दिख रहा है ना, ओके ठीक है, बढ़िया। तो ये हाँ, तो हम लोग ये Practical, दो पार्ट हाँ। में करेंगे, जैसे कि एक बार स्क्रीन में जाएंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, और बाद में इसमें आएंगे, ठीक है, ओके।
बीच बीच में अगर स्क्रीन ना दिखे तो मुझे चैट में लिखना, ठीक है आप लोग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री खत्म। बस ये एकदम एक बार में आप लोग समझ जाना कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो पूछना, कोई इशू नहीं। दूसरा, ही ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। तो अभी क्या क्या हो गया, एक अकाउंट खोला। कहाँ पे खोला, बैंक में खोला। तो पहले क्या था, उसके बाद कैश था, अभी बैंक में अकाउंट खोला। तो अभी क्या हो गया, कैश और रखे बैंक। तो कैश क्या है, एसेट है। तो कैश अगर मैंने बैंक में अकाउंट खोला तो मेरे पास कैश तो घट जाएगा, एसेट मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डाउन हो रहा है। तो एसेट अगर डाउन हुआ तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने निकाल दिया कि कैश क्रेडिट होगा इस केस में। बैंक क्या है, बैंक भी हमारे लिए एसेट है। तो इस केस में क्या होगा, बैंक के अकाउंट में क्या होगा, मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज। ओके, हियर बैंक इज और एसेट, बैंक अकाउंट और बैंक बैलेंस इज और एसेट। सो अगर एसेट इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, यही तो रूल है ना, ठीक है। तो ये है रूल। तो अभी नेक्स्ट जनरल एंट्री हम लोग देख लेते क्या है। ये है नेक्स्ट जनरल एंट्री, कैसे नोट करेंगे, ये देखिए हम लोग। अभी इसको हम लोग इस तरह से नोट कर लिए। क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बस हो गया, 3 लाख रुपीज हमने डिपॉजिट कर दिया, ये खत्म हो गया सेकंड एंट्री। ओके, अभी फिर से क्वेश्चन में चलते चलिए। क्या क्वेश्चन है, परचेज मशीनरी फॉर 50,000। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है मशीनरी। ओके, इसमें है हमारा मशीनरी, और है क्या लिखा है, कुछ लिखा है क्या, कैश और बैंक कुछ नहीं लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा होता है ना, बैंक कैश कुछ भी हो, विल प्रिज्यूम और विल एज्यूम दैट ट्रांजेक्शंस हैव बीन टेकन और ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस इन कैश। कुछ अगर नहीं मेंशन है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि कैश में ही हुआ है, ठीक है। तो मशीनरी क्या है, हमारा एसेट है। ओके, तो मशीनरी हमने खरीदा, तो अभी मशीनरी में तो अभी क्या हो, एसेट बढ़ जाएगा। मशीनरी तो बढ़ गया ना हमारे लिए बिजनेस में, तो एसेट इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने से एसेट इंक्रीज से डेबिट होता है, हो गया ये वाला डेबिट। तो नेचुरली हम लोग ये पता ही चल रहा है कि ये अभी एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। तो फिर भी हम लोग रूल अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से चेक कर लेना कि अभी फर्स्ट, बहुत लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे जानने, तो इसलिए जब भी आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो ये याद रखना है कि दोनों रूल सही से बैठे। सो हियर कैश इज व्हाट, our asset. So we have paid cash for purchasing a machinery, isn't it? So our asset decreased. So when asset decreases, the rule is credit. Okay, so machinery account debit to cash, here we will apply the rule machinery account debit to cash. Very simple. So our third journal entry is here. Here is our third journal entry. So this is our third journal entry. Being machinery purchased in cash. This is what? This is our third journal entry. Okay. So I am not going to the next screen now. I have brought this question here. Okay, one
सो चलिए अभी दूसरा जर्नल एंट्री करते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक. ठीक है, तो फर्नीचर परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक. तो चलिए अभी देखते हैं क्या चीज है. फर्नीचर परचेज, तो यहाँ पे क्या हो गया? फर्नीचर है. बहुत लोग शायद शायद खुद से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है. ठीक है, तो एसेट क्या हो गया हमारा? बढ़ गया. यार फर्नीचर इज आवर एसेट. एसेट has increased because we have purchased, so asset increased. Asset increase means it will be debited. And on the other hand, what account will be there? It is said that by check. By check means bank account will be affected, isn't it? Bank is our asset account, so we have paid, so our balance will reduce. ठीक है ना? अगर हमने चेक से पेमेंट किया क्या होगा? हमारा एसेट से बैलेंस घट जाएगा. मतलब बैलेंस तो ऐसे पेमेंट के बाद क्या होगा? बैंक अकाउंट में कम जाएगा, घट जाएगा. तो एसेट डिक्रीज मीन्स क्रेडिट. दिस इज द rule. And then coming to the fourth journal entry. This is the fourth one. Okay, being furniture purchased and payment made by check means you can mention the check number also if it is mentioned. Means narration is for noting the or describing the journal in short, or you are just explaining the journal. You are just explaining the transaction in very short and clear way. Okay, next, purchase goods on credit from Rahul Dravid. Okay, we have purchased goods. So in earlier class or in the last class, I have said that when there is something written like goods, then or we have purchased goods. So we will not mention. In other entries we have mentioned machinery and furniture directly, but in case of goods we will write purchase account for purchase, sales for sales only. Okay? For goods we will use the term purchase account. Purchase. Okay, this is just for goods. For goods we write purchase. Okay, goods. So we have purchased. So it is our expenses. For expenses we have purchased goods. So goods increased or it has increased the expenses. Then expenses increase means debit. And on credit, so there is no cash or bank. Directly there is Rahul Dravid. We'll mention the Rahul Dravid. Rahul Dravid is what? Because he is giving us goods on credit, so he is naturally our liability. He is our liability because we have to pay Rahul Dravid. Okay, so liability increased. We have purchased on credit, so our liability increased. We are liable to pay Rahul Dravid, so our liability increased. So if liability increases, then account is credited. That's it. One account is debit, other is credited. So note down the journal like this. Like this. Purchase account debit to Rahul Dravid. Being goods purchased from Rahul Dravid on credit. Okay. This is the journal entry.
someone has mentioned that goods or stock account. Actually, in some books or some books are there in the market, like they are mentioning goods or stock account like this. But goods and stock is recorded, but you cannot write goods account because it is totally invalid thing. If you refer the basic books or basic accountancy books, then you will find that goods are not recorded at all in the like goods account. Okay, goods are recorded like purchase account, sales account, purchase return, or sales return. Okay, for purchase you record purchase account, for sales you just record sales account. Okay, purchase and sales, right? Okay, I'm sharing the link first. One second. Okay, I have shared the link in the group. Now I hope that others can join. Coming back to the previous screen. So here, purchase account debit. So I think you should not write like goods account or stock account like this. Okay, because goods account is totally invalid. You cannot write goods account. Okay, purchase account. Whenever there is a purchase, you write purchase account. Or if there is sale of goods, then write sales account. If there is purchase return of goods, then write purchase return account. If there is return of sold goods, then write sales return. Okay, don't write goods account. So basically, this transaction is over. Now I'm moving forward. Paid to Rahul Dravid in full settlement. Okay, next question is, see, paid to Rahul Dravid in full settlement means what? There is same thing, means we have paid Miss Ragini. Don't worry, for last 15 minutes the video is being recorded. Don't worry, and you will get the video. Okay, and from here you just try to grab the journal entries. These things are also basic things. Okay, just try to grab from here. So paid to Rahul Dravid in full settlement means, first part we'll consider this thing, paid to Rahul Dravid 78,000. Okay, and we are not considering full settlement. One second, just for the first phase, what is paid to Rahul Dravid means, here there is one account affected, Rahul Dravid, and other is paid. We have paid. There is nothing mentioned about the cash or bank or cash or check, so we will consider cash. So Rahul Dravid was our liability. Earlier transaction we have seen that we have purchased from Rahul Dravid, so Rahul Dravid was our liability, and we are liable to pay to Rahul Dravid, isn't it? Rahul Dravid was our liability. Now we are paying to Rahul Dravid means our liability will be reduced. In last transaction we have seen that our liability increased, but now we are paying to Rahul Dravid. Now we are paying to Rahul Dravid, our liability is getting reduced. मीन्स हमारा अभी लाइबिलिटी क्या है, घट रहा है. पहले लाइबिलिटी जो था, अभी वो लाइबिलिटी क्या हो गया, घट रहा है. तो अगर लाइबिलिटी घट जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, लाइबिलिटी घट जाने से डेबिट करते हैं. ठीक है, अभी हो गया कैश. कैश क्या है, एसेट है. ये तो दिमाग में घुस ही गया होगा अभी. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कैश इज एसेट, एंड इफ asset decreases, it is credit. We are paying, so our asset decreased, so it is credit. Now
we have understood that Rahul Dravid is what? Rahul Dravid debit and cash credit. Okay. Now, how will we record the journal? So, Rahul Dravid debit. Okay. Here it is mentioned that in full settlement. Full settlement means what? We have purchased from Rahul Dravid for rupees 80,000. No, we have purchased for rupees 80,000, but we are paying how much? 78,000. Now we are paying Rahul Dravid 78,000 in full settlement. Means what? There is a difference of rupees 2,000. Means in full settlement means what? Our account is closed. Means here after that Rahul Dravid will not get anything. It is account is settled. Means 2,000 he has allowed us discount or we have received discount. Whenever there is full settlement, if we are paying less, then it is our discount we are receiving. Okay. If in case of full settlement is used, if we are making payment and we are paying less, then means here discount we will get the discount. तो राहुल द्रविड़ के पास कितना ड्यू था? 80,000 था. 80,000 पेमेंट करना था. तो टू कैश कितना कैश पेमेंट करेंगे हम लोग? 78,000. तो अभी तो मैच नहीं हुआ ना, दोनों 80 हो गया 72 हो गया, तो डिफरेंस कितना है? 2,000 का. तो ये 2,000 क्या है हम लोग का? We have received the discount received. Okay, it is our gain. So income increased. So discount received is our income. Income received is credit. So here 80,000. Here also debit 80,000, credit also 80,000. Okay. Okay. I am unmuting you all. If anyone have any question on this, then please ask, because this is a little new. So I want to hear from you. Anyone who has not understood this one? Sir, without writing 78,000 debit entry, you should write directly 80,000, give 2,000 discount. Sorry, I didn't get you. बोलिए फिर से बोलिए. Sir, without writing 78,000 debit entry, you have to write 80,000 debit entry and give 2,000 discount credit entry. Is it correct, sir? You are saying that without writing 78,000. Yes. So you have to write only directly debited 80,000 and give discount 2,000 credit entry along with cash upon 78,000 credit entry. Yeah. But you are saying that for this we can make two entries. Yes, sir. Yes, sir. Can we make it, sir? Yeah, you can make. See, I have given the entire journal in compound journal entry. You can write this way also. See, Rahul Dravid debit 78,000 to cash 78,000, and after that again Rahul Dravid debit 2,000 to discount received. Okay. Are you talking about this one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you can also write like this also, but this is much easier because you can if you can write this one like this, then it's okay. Otherwise you can write this way also, no problem. Okay. और किसी को कुछ पूछना है? सर. हाँ बोलिए सर, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने का क्वेश्चन आता है, हाँ, तो जो एंट्रीज दी गई है, हाँ, वो मतलब हर एक से मतलब संलग्न होगी क्या? मतलब सेपरेट कुछ नहीं होगा? हमें ऐसा कंसीडर करना ही पड़ेगा क्या? हाँ, ऐसे बनाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि यही तो बेसिक है. जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे 10 दे देगा, तो आपको क्या ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई अकाउंट के साथ किसी का लिंक अगर नहीं होता है, तो क्या होगा? डायरेक्टली अगर पोस्टिंग करेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन कैश अगर ट्रांजेक्शन अगर 2 4 5 है, तो आपको पहले कैश का बैलेंस भी निकालना है. बैलेंस कितना निकल रहा है, ठीक है? अगर किसी जैसे कि राहुल द्रविड़ है, मतलब जो हेलो, बोलिए 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 बोलिए.
मतलब जो कुछ भी निकल रहा है वो या कि एक कंपनी का एक फर्म का ही है, मतलब अलग अलग का नहीं, एक का ही ट्रायल बैलेंस बन रहा है। हाँ, एक एक का ही question बन एक के ही बन रहा है सर, एक के बन। सो ये तो सर 10, सिर्फ 10 दिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, Okay. सिर्फ 10 एंट्री को बस हम लोग क्या कर रहे हैं पहले जान, मतलब एक साथ हो जा रहा है, इसलिए आप लोग को लंबा लगेगा थोड़ा। लेकिन क्या हो रहा है कि ए पहले ए हो रहा है, जैसे कि रोज काम हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री करते जा रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स। ओके, आफ्टर दैट वी आर पोस्टिंग इन द लेजर। ओके, and at the end of the means at the end of the financial year we are just balancing the ledger को बैलेंस कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, ज्यादा एंट्री नहीं देंगे, 10-12 देंगे और बोलेंगे कि आपको जर्नल एंट्री करना है और लेजर बना के उसके बाद ट्रायल बैलेंस में डालना है। तो आप लोग अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो समझ जाएंगे कि मिल मैच हो गया, बस वही है। लेकिन प्रोसेस यही है सर, ऐसे करना ही पड़ता, सेपरेट से नहीं, कुछ नहीं होगा सर। हाँ, सेपरेट से हो सकता है Okay. अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली बैलेंस दे दे, मतलब जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं देगा तो तब बन सकता है। समझ लीजिए आपको दे दिया कि कैश बैलेंस 20,000, ठीक है, बैंक बैलेंस 50,000, ठीक है, और Sir, may I? प्लीज प्लीज। पिछले हाँ, साल in the ऐसा ही last क्वेश्चन year- आया था। In the last year's paper, Okay. 31st March balance of the 30 March has been given, and just we have to post it in trial balance, debit credit. Yeah, in that way, Entries. if it is given like this, it is very easy, no problem. Okay, Yes, that is very easy for us. yeah, that is very easy, but for that you have to understand the basics. I am giving the means you have to for Yes, that, yes. for that things to Without reach this, that without this, we cannot put Yes. Yes. the entries in trial balance directly. Without Yes. without this knowledge. Yes, without knowing this knowledge, you cannot. Maybe you can post the trial balance like this for one time, and after that your trial balance will tell it. But you will not understand the basics. You will not understand if there is any modification. Basic. Okay. And even not Yes, not only yes. trial balance is a very easy thing. But after that, you have to prepare the final accounts. Remember that, and profit and loss account, balance Final sheet. accounts, yes. Yeah, final account. For the There is no- final account, this knowledge is This knowledge is very very important. easier, yeah. Yes. It is the Important, It yes, is, sir. it is the base, in fact. Okay, so basic. I am just trying to give you from the beginning. Okay. Yes, sir. Thank Yes, you. sir. Thank you. Thank you. थैंक्स सर। Okay. So we are moving ahead. So here you've seen the journal entry. Rahul Dravid debit 80,000 to cash. We have paid 78,000 cash. See, 78,000 cash. And since here mentioned full settlement means मेरा हिसाब किताब पक्का कर दो, खत्म कर दो, बस फुल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो 80,000 उसको पेमेंट करना था, 70,000 करके हिसाब किताब बराबर, बोलते हैं ना कि हिसाब किताब बराबर, तो दिस इज कॉल्ड हिसाब किताब बराबर। फुल सेटलमेंट मीन्स हिसाब किताब बराबर। तो 80,000 तो अकाउंट में लिखा है, 80,000 उसको पेमेंट करना है, 70,000 पेमेंट कर लिए, हिसाब किताब बराबर मान लिए, तो बाकी 2,000 का क्या हुआ, वो हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट रिसिप्ट तो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, बस दैट इज ओके। सो journal entries here is the journal entry. See, here is the journal entry, being cash paid to Rahul Dravid and discount received. We can also write like this, being cash paid to Rahul Dravid in full settlement and discount receipt. That's it. Narration you can give in your own way, not necessary that you have to give this one only. This is the fixed narration. Narration is nothing. Narration is just to explain the transaction, means what has happened actually. So नरेशन का मतलब कि आप छोटा सा कुछ भी लिख देंगे ना कि मतलब राहुल द्रविड़ से पैसा लिया और अकाउंट हिसाब किताब बराबर, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नरेशन का ही है, कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आ गया हमारा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज क्या है,
तो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे क्या है, पर्सनल यूज के लिए गुड्स दिया है। तो गुड्स कहाँ से आता है, हम लोग क्या करते हैं, जब परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करते होंगे हम लोग, तभी तो हमारे पास है ना, परचेज है, या फिर जो भी हो गुड्स है, यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स, ठीक है, गुड्स। तो गुड्स परचेज किए थे हम लोगों ने, तो अभी किसने ले लिया, ओनर ने ले लिया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कौन लेगा, यार ओनर हैज टेकन goods from his business. Suppose someone is having a grocery shop and he has taken a full bag of rice and 5 kgs of pulses and 2 liters of mustard oil and all these things. So whenever he takes goods from his business, so I have already told you that you cannot keep the things unrecorded because business and owner are separate. They are not one and only. Though business is run by the owner, but we'll treat it. Otherwise, we cannot make our accounts correct. तो ऐसे हो जाएगा ना कि जो ओनर लेके जाएगा, उसका बेटा आ गया चॉकलेट दे दिया, कोई उसका बेटी आ गया 500 रुपये दे दिया, तो ऐसे ही चलता जाएगा। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, वो हिसाब किताब नहीं मिलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। अरे भाई ठीक है, ओनर हैज टेकन फ्रॉम हिज बिजनेस, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो वन टू रेस्ट्रिक्ट, but we have to maintain the books of account correct, isn't it? Suppose हम लोग ने अगर काउंटर पे काम करते हैं, ठीक है, एमपीसीएम पे, तो आईपीओ चाहिए होता है या फिर किसी को स्टाम्प सेल करना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसे ही क्या कोई ले लेगा, क्या नहीं लेगा ना, तो क्योंकि अकाउंट शाम को मिलाना होता है। तो दुकान में क्या होगा, अगर खुद का भी दुकान है तो क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स तो टैली करना पड़ेगा कि कितना सामान लिया कितना सामान दिया। तो गुड्स ओनर ने ले लिया, नो इशू, तो अभी क्या हो गया, फॉर पर्सनल यूज दिया। तो परचेस हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपेंसेस था, पहले तो एक्सपेंसेस क्या किया था हम लोगों ने, एक्सपेंसेस या फिर गुड्स था, गुड्स हमारा क्या था, एक बोल सकते हैं हम लोग एसेट है। और अभी उस एसेट से, एसेट बोल सकते हैं, गुड्स को पकड़ेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर परचेस को बोलेंगे तो परचेस क्या था, पहले हम लोग का एक्सपेंसेस था। तो अभी वो क्या हुआ, परचेस हम लोग किए नहीं, हम लोग यहाँ से क्या रिवर्स हो रहा है, घट जा रहा है, तो अभी पर इसको क्या करें, परचेस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। या फिर अगर गुड्स को हम लोग डायरेक्टली पकड़ेंगे कि एसेट था, तो एसेट भी घट रहा है, एसेट भी घटने से क्रेडिट होता है। तो अभी नया चीज मिलेगा आपको, ओनर ने जो लिया है उसको क्या करेंगे, ओनर का नाम लिखेंगे या फिर क्या करेंगे। तो मान लीजिए अगर ओनर कुछ भी लेता है दुकान से ना या बिजनेस से, उसको हम लोग ड्राइंग्स के नाम से जाने, ड्राइंग्स, ठीक है। और ड्राइंग्स क्या है, ये भी एक कैपिटल है, ठीक है, ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल। ड्राइंग्स मतलब ये तो कैपिटल का पार्ट है। जब ओनर, whenever owner pays in the business or gives money to the business, our capital increases, but whenever owner takes money from the business, his capital decreases. Okay, for rule, what is the rule for capital, decrease in capital is debit. So we'll record the transaction like this, drawings account debit to purchase account. Okay, let's have a look on the journal. This is the journal. Being goods taken for personal use by the owner. For rupees कितना, कितना होगा उतना, बस यहाँ पे कितना 5000 है, 5000 नोट कर लिया, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी गुड्स सोल्ड टू अक्षय कुमार 15,000, तो अक्षय कुमार के पास हम लोगों ने सामान बेचा, कितने का बेचा, 15,000 का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सामान को सेल करते हैं। जनरेटर क्या होगा, खुद से कोई ट्राई कीजिए तो, गुड्स सोल्ड टू अक्षय कुमार, गुड्स, तो गुड्स को सोल्ड है तो क्या होगा, सेल्स। हम लोग लिखेंगे जब सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, गुड्स लिख दिया यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो गुड्स क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स है, तो हम लोग का क्या है, ये है
रेवेन्यू, रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू बढ़ गया ना, अगर वी हैव सोल्ड गुड्स टू अक्षय कुमार, so our revenue increased. So if revenue increases, rule is will credit sales account. Okay, very good, Ankit Solanki, correct. Okay, next is Akshay Kumar. Akshay Kumar, ठीक है। तो we have sold Akshay Kumar goods. So we have sold goods to Akshay Kumar. Then means what? Akshay Kumar is what? Akshay Kumar is our debtor. He is liable to pay or we will receive money from him. अगर किसी को हम लोग उधार देते हैं, इसका मतलब क्या है? वो हम उससे हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा वापस। तो अगर किसी से कुछ भी मिलना होगा इन फ्यूचर, अगर एनीथिंग रिसीवेबल इज आवर एसेट, है कि नहीं? इन प्रीवियस केस राहुल डेबिट क्या था हम लोगों के लिए? क्रेडिटर था, क्योंकि हम लोग को पेमेंट करना था। तो इस केस में क्या होगा? अक्षय कुमार को हम लोगों ने माल बेचा, वी हैव सोल्ड गुड्स टू अक्षय कुमार। इन दिस केस अक्षय कुमार विल पे एंड विल रिसीव मनी। सो आवर एसेट इज व्हाट? रिसीवेबल, मींस our asset will increase, isn't it? Or it is increasing, debit. Then journal entry will be Akshay Kumar debit to what? Goods account? No, it will be sales account. Don't write goods account, sales account. See, this is the journal. This is the journal entry. 15,000 Akshay Kumar to sales, being goods sold to Akshay Kumar on credit. See, if nothing is mentioned about sales or purchase, then we will consider as cash transaction. But if nothing is mentioned about cash or credit, but name is mentioned of the buyer or seller, then we will treat it as credit transaction. Since here nothing mentioned cash or credit, but name is mentioned only, then we have treated it as credit transaction. Okay. Yes, correct. Good question. Bhaskar Pratim Nath. Good question. See, I have already discussed it just now. Akshay Kumar, goods sold to Akshay Kumar, but cash or credit, nothing mentioned. If nothing is mentioned, but name is mentioned, then we'll treat it as credit. If no name is mentioned, okay, then we'll treat it as cash transaction. Okay, this is the general rule. If it is mentioned here, goods sold to Akshay Kumar in cash, then we will not record Akshay Kumar as debit. Okay, we'll rather record it as cash transaction. Thank you. Next, I'm going forward. So we sold goods to Akshay Kumar for 15,000. Now, amount received from Akshay Kumar 8,000. Okay. Here Akshay Kumar is here AK, and then amount received. So naturally, here nothing is mentioned like bank or by check. So we'll treat it as cash. Nothing is mentioned about the amount, whether it is cash or check. So we'll treat it as cash. So Akshay Kumar paid. So Akshay Kumar was what? Akshay Kumar was our asset. Okay. Cash is what? Cash is our asset. So amount received from Akshay Kumar means what? Our asset increased. We have received cash. Asset increased. So we'll debit. Isn't it? Akshay Kumar was also our asset receivable. So it was due amount. So now asset decreased. Decreased means we are just posting reverse to his account. Okay, because earlier we have
debited his account. Now we will credit his account because he has paid, he is paying the amount, and our asset is reducing because from debtors list this amount will be reduced. Okay, now the journal entry will be like this. Cash account, debit, how much? We have sold 15,000. Should we write 15,000 or simply write 8,000? Okay, I am unmuting for 1 minute. क्या लिखना है? 8,000, sir. 8,000 लिखेंगे ना? Because Yes. it is not mentioned as settlement. Yes, very good, right. It is not full settlement. So simply we will receive 8,000 from Cash account debit to Akshay Kumar, credit 8,000. Right, correct. By cash to Akshay. Yes. Cash account to Akshay Kumar. So here we are not getting any discount, is it? Okay. Here we are not getting any discount. In earlier case, it was mentioned full settlement. There may be question in your mind also, like earlier case 8,000 was sold, 78,000 received. We have received 2,000 discount, we have showed. But in this case, 15,000 is here, but we have received 8,000. There may be 7,000 rupees discount. No. Okay, there is no discount because if full settlement is mentioned, then only we write discount received or discount allowed. Okay. In other cases, there will be no discount, or if there is no full settlement, no need of passing that discount entry. Okay, then now I am muted you all. Okay, now Akshay Kumar to sales 15,000. This means what? You can easily understand that there will be a balance in Akshay Kumar's account of rupees 7,000 because there is something. One second. It is 15,000. Okay, means we'll prepare the ledger. We'll see there, but from these two journal entries, what can you guess, or you can find it out clearly that Akshay Kumar, we sold goods to Akshay Kumar 15,000. He paid rupees 7,000. Means there will be surely a balance of rupees 7,000. Okay, that will be posted in trial balance. We'll see in the next ledger portion. Debit 15,000, not 50. Yes, right. We have corrected. Thank you, Ankit Solanki, for your observation. Yes, it is corrected already. Okay, now next question is salary paid rupees 15,000. So these things are very easy. We have already passed entry. Salary is what? Salary is our expenses. Expenses increasing. If asset expenses increases, then it is debit. Okay. I'm giving the rule again in front of you so that you can I'm just giving the see, I'm putting the rule in front of this, so you can easily understand. Okay. See, now the question, salary paid, no? Salary, yeah. Salary is one account, salary paid. In which mode it is paid? Nothing is mentioned. So we'll consider cash. Salary is what? Of course, it is our expenses. Expenses, we are paying salary. So our expenses
increased. So expenses increased means what? We will debit the account. This is the rule. Keep this rule whenever you will be passing journal entries. You practice. Keep this rule in front of your or rough book or anywhere, or you can remember this one, no problem. Asset, we are paying salary, so our asset is decreasing, so it will be credited. Simple. Okay, likewise this way we have passed the last journal entry, third last journal entry. 2 more journal entries left. I have to correct this one again. 15,000. Okay. You can write the narration like being salary paid in cash. Okay. In narration, we can also write the name of the employee to whom it is paid. Okay, no problem. Because it is cash payment, so I have noted the transaction. Next, rent paid by check. Rent paid by check. Rent is what? Arun Bhardwaj wants to speak something. Once again, भारद्वाज जी, एक मिनट रुकिए, आपको अनम्यूट करते हैं एक सेकंड के लिए. अरुण एम भारद्वाज. अरुण एम भारद्वाज. बोलिए सर. You want to speak something? यस सर. हाँ बोलिए. हेलो सर. हाँ बोलिए बोलिए. अक्षय कुमार से 15,000 को परचेज किया. हाँ हेलो. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. उसके बाद 8,000 पेमेंट किया. वो व्हाट अबाउट दैट 7,000 बचा हुआ ना, उसका क्या? वो तो वही तो फंडा है. अक्षय कुमार का बैलेंस 7,000 रह जाएगा ना. अगर अक्षय कुमार 15,000 का खरीदा सामान, वो बैलेंस में रह जाएगा सर. हाँ, वो बैलेंस में रह जाएगा. और अक्षय कुमार क्या है, हमारा डेटर है, वो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में आएगा सर. ठीक है. ओके. So 8,000 should not show. व्हाट? So Your voice last is you not clear, are sir. something you the difference of 8,000 you are not showing now. Afterwards, after final payment, that sentence will come. No, that time you will show. No, difference in journal there is no. Hello? We do not record anything in the journal for difference. Okay. In the we find the balance in the ledger. Okay. We'll make the ledgers, and from the ledger account we'll find the balance. Okay. And after getting all the values from the ledger, we'll post in the trial balance. Okay. For now, we are just recording the transactions in journal. Okay. Thank you. Okay. Okay. Now the question is rent paid by check. Here, rent paid by check means there will be one more account affected, that is bank. Rent is what? Naturally, it is not capital, it is not liability. Of course, it is expenses. It is expenses. Not asset, not revenue. It is expenses. Rent is our expenses. It is quite easy, and everyone knows that rent and all these things are our expenses. So expenses increased, we paid rent. So expenses increased means we will debit. And here bank is our asset. We paid, so our bank balance reduced. So it is credit. So this is the modern rule. As per this rule, we have applied this rule
and we have found the journal entry. See, rent to bank, rent to bank being paying rent paid by check. Okay, you can write this much, or you can add also like this, by check bearing number like 2, 3, 4, like this, dated, means you are getting a clear idea about the check also. This is don't write the second part, no problem. I'm just giving you an example how to write the journal. Okay, you can write the check number also if it is required. Otherwise, being rent paid by check is sufficient. Being rent paid by check is sufficient. This much is sufficient. Okay. And the last one is commission received. Commission received. So, commission received. Commission received. Commission received is what? Capital, liability, expenses, asset, or revenue. The name itself self-explanatory. It is received. So means what? It is our revenue, not expenses. If I am paying the commission, then it is our expenses. Revenue. So revenue is increasing. So we will credit commission received. Then which account to be debited? There is nothing mentioned. So nothing mentioned means we will write cash. We have received cash. Asset. So asset increased. We have received cash. Debit. Okay. Debit. Cash account debit to commission received account. 6,000. This is the journal entry. Write the mention here. Being commission okay, I am back again. Okay, the thing is that few questions on the chat section, so I am taking one by one. Okay, commission receiving check we may also discuss. Definitely, if it is commission is received, if commission is received by check, suppose commission is received by check, then we'll just write bank in place of cash. That's it. Okay. Cash and bank. If anything is done through check, then we'll write bank. For April 12 transaction, Vikram. Okay, I'm repeating the transaction of 12. Okay, Mahesh M. Please explain goods sold to Akshay Kumar. I am thinking sales will be affected. Yes, goods sold to Akshay Kumar. That is the transaction of April 17. See, Akshay Kumar is affected already. Akshay Kumar debit to sales. Mahesh M. Sales account, Akshay Kumar debit to sales. Akshay Kumar affected already because goods sold. So we have explained it. Akshay Kumar debit to sales. And April 12 transaction. April 12 transaction means goods taken for personal use. Means whenever there is personal use of anything, then we note it down with drawings, because owner
is drawing something from the business. So drawings is a capital. So whenever owner gives capital, his capital increases. But when owner takes something from the business, then his capital decreases. So capital decreases means we debit the account. That's why we have debited the account. And we have credited the purchase account. Means what? He had taken goods from the business. Okay. If you consider goods, we'll write purchase. If you consider goods, suppose if you are considering goods as asset, then he is taking goods from the business, your asset decreasing, then you can write credit. Or purchase was earlier recorded as expenses. Earlier it was recorded as expenses. Now expenses what? Decrease because it is taken by the owner. So it is credit. Means in both the case, can you generalize personal use also? Personal use also means he has taken goods from the business. So it has been recorded as drawings. Means it will be accounted from the owner's personal account. Personal account means what? He has given capital and drawings are recorded, and at last these things are deducted from the capital. Drawings is part of capital. Okay, drawing is considered as capital. Okay, this much transaction for today in journal entry. All the journal entries over. We have passed all the journal entries. Okay. Now we have to make the ledger account. Something happened here. What's happening? Now we'll pass the ledger. Here is the ledger. This one is the journal entries we have recorded. So I have brought this thing here for your convenience. Okay, so that you can easily understand. See, what we'll do, first entry is cash account. Suppose we are maintaining here cash account. Okay, so cash account debit to capital account. I have already showed you in the study material also that whenever there is a transaction showing increase in asset, here increase in asset, cash account debit. So we'll post it in debit side to capital. Means all twos transaction written to like two will be posted here. So you'll understand of your own, no problem. On from journal to ledger, here is the difference. In journal we write ledger folio, but in ledger we'll write journal folio. Okay. Capital account. Capital account how much? 5 lakhs. We'll write here 5 lakhs. Okay. Date is April 1. April 1. Then comes the second journal entry. Then you can also write all the ledger at a time. Cash transaction. We are recording the first. We are recording the cash transaction. Suppose here another transaction. Bank account debit to cash. So cash credited. So cash is credited, no? So we'll post in the credit side by
bank. If a particular account is debited, then we'll post in the debit side. Okay. If a particular account is credited, then we will post in the credit side. So in the first transaction, we have seen that cash account is what? Debited. So we have posted in the debit side. See. Okay. In the second transaction, we have seen that cash is what? Credited. So we have posted in the credit side. Okay. In the third transaction, cash is what? Credited. So naturally we will post in the credit side. This is the credit side. But we will write the name of the account as machinery. Machinery 50,000. On in bank it is 3 lakhs. Okay. This is the way of recording the transactions. This way we can write all the transactions of cash. Then we'll write the capital. If anyone is having any question, please ask. I'm just going to unmute you. Anyone, please speak. You can unmute now. Anyone wants to speak something? Say something. Any question? No, sir. Okay. Okay. हेलो Yes. हेलो सर हाँ बोलिए सर बोलिए. Please tell. हाँ सर ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन और ये थर्ड ट्रांजैक्शन एक बार थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे सर. कहाँ का मतलब जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री को रिपीट करना है या फिर लेजर में? ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ. In the first transaction में क्या था? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब रविशंकर स्टार्टेड बिजनेस. तो क्या कैश एसेट है हमारा. तो बिजनेस में क्या आया था? कैश एसेट आया था. एसेट इंक्रीज, तो इसलिए हम लोगों ने एसेट को डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट. ओके. और कैपिटल क्या है? कैपिटल हमारा क्या है? कैपिटल का रूल क्या है? कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्या करना है? कैपिटल कैपिटल ही है. तो कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं. तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया था हमने. ठीक है. और थर्ड एंट्री क्या था? परचेज मशीनरी फॉर कैश. तो मशीनरी क्या है? हम लोगों को क्या था? मशीनरी एसेट था. एसेट अगर इंक्रीज होता है क्या करना है? उसको डेबिट करना है. और कैश हमारा सेम एसेट है लेकिन डिक्रीज हुआ है. तो कैश अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है उसको. ठीक है, बस यही चीज है. ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, सब मिला के जितना अकाउंट्स है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सबका एक एक प्रोफॉर्मा ऐसे लेजर बनाना है आपको. ठीक है, जितना भी है सबका एक एक प्रोफॉर्मा में लेजर बनाना है. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो जर्नल हम लोगों ने किया इन सभी का लेजर में पोस्टिंग करेंगे. ठीक है, तो अभी आज के दिन आप पूरा ये जो ट्रांजेक्शन जितने भी हम लोगों ने किए उसको एक बार देख लो आप लोग, और लेजर पोस्टिंग करना है. और कितना लेजर का जरूरत पड़ता है देख लो. कितना लेजर होगा? लेजर अकाउंट ड्रॉ करना है. और जर्नल से हम लोग देख लेते कितना करना है. ये हो गया हमारा कैश के लिए एक करना है,
कैपिटल के लिए 1 2 हो गया, बैंक के लिए 1 3, मशीनरी 4, और कैश के लिए फिर से एक करना है क्या? नहीं करना है, जो ये कैश है उसी में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, हो गया। अभी फर्नीचर के लिए 1 5, परचेस के लिए 1 6, राउंड टेबल के लिए 1 7, कैश के लिए हो गया 8 हो गया, डिस्काउंट के लिए रिसिप्ट के लिए 1 हो गया। ठीक है, 8 हो गया डिस्काउंट रिसिप्ट के लिए। ड्राइंग्स के लिए 1 9, अक्षय कुमार के लिए 10, सेल्स के लिए 1 11। अक्षय कुमार के लिए ऑलरेडी बना लिया तो फिर से बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी अकाउंट को 2 बार नहीं बनाना है। अक्षय कुमार हो गया ना, तो इसके अंदर जितना भी होगा सब आ जाएगा। 11 और 12 हो गया सैलरी के लिए, रेंट हो गया 13 और 1 हो गया 14। तो हम लोग को 14 लेजर बनाना है। ठीक है, तो मोहम्मद निजामुद्दीन, राइट, 14 लेजर्स बनाना है। ठीक है, लेजर बनाना है सर, एक का बैलेंस नहीं होगा। यस, मोहम्मद निजामुद्दीन बोल रहे हैं कि मतलब एक का तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों ने राहुल द्रविड़ से 80,000 का खरीदा, फिर सेटलमेंट हो गया, लेकिन हम लोग को लेजर बनाना है सर। ठीक है, विल मेक द लेजर्स, विल प्रिपेयर लेजर, देयर विल बी नो बैलेंस, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट विल prepare the ledger. After that, we will come to know. Suppose there are 100 entries. At any point of time, I cannot say that there will not be any balance. After balancing, we can say. But we will make 14 ledgers. Okay. For tomorrow, this is your homework. You prepare the 14 ledgers. If anyone can do of your own from the example, that is good. Otherwise, I will show you ledger posting and the final trial balance in the next class. Then our trial balance session will be almost over. And 1 or 2 questions I will give as your homework. That will be fine. Okay, thank you for today. If anyone is having any question, please ask. You can unmute now. Sir, I have a doubt. Yeah, please. Sir, goods sold to Akshay Kumar on credit, they are not mentioned as credit basis. But you taken on a Akshay Kumar account as a credit basis purchase sold to go. Right. So I have told in the class that if nothing is mentioned, okay, suppose sold goods to ABC, okay, if nothing is mentioned, Okay. here sold goods written means here sales is affected, ABC is here. Yes. It is neither cash nor credit, I don't know. Okay, so we will assume since name is mentioned, so we will assume it credit. If it is written that in cash, then definitely we can go for that, no problem. But this is the general practice. If only name is mentioned, we'll consider it as credit, because we note down the name of the person only when there is credit transaction. Okay, it is general assumption actually. Suppose we are every day we go to the market and fish market or vegetable markets, but we do not record the name of the vendor because we are purchasing on cash basis. Okay, this is just a general practice that whenever there is name is mentioned, we consider it as credit. If nothing is mentioned, we'll consider it cash transaction. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Anyone else? Anyone is having any question?